Golf Club Limited, Chembur, Mumbai. I'm here to an episode of People with Kapil Dev. When I say the word Kapil Dev, what all comes in your mind? The 83 World Cup final. Yeah, like present with me, but when you pour tea in it, something hot in it, my name comes on it, Anupam. The true responsibility is that this cup should never break. मैंने बोला ना? क्या बोला? टूटना नहीं चाहिए. First of all, thank you for doing the show. Not at all. Very, very happy about it. So when did you start playing golf? I started playing golf the day I stopped playing cricket. Achha. Almost within 2-3 weeks. I took a break and I want to stay away from the people and I said, यार मेरे को नहीं जाना पब्लिक में, मेरे को थोड़े दिन अपने आप में बिताने हैं. Okay. And a friend of mine said कि चल golf खेल. मैंने कहा यार मेरे को नहीं खेलनी है golf. He said the best thing about golf is आप चलो, शुरू में होगा, पहली टी पे कुछ लोग आपको मिलेंगे. After that, it's around about 150 acre. You will be with your 4 friends and caddy. Nobody else will disturb you. So I like it, enjoy it. Just start hitting the ball. I felt comfortable. So that's how it started. Every cricketer, every sportsman must be going through this so-called discovery that he is not agile, he is not over there. So आपने तो बड़ा अच्छा reinvent किया अपने आप को. I have seen your motivational lectures. You go worldwide and talk about your motivations. You wrote 3 books. You have become one of the very good golfers, etc. What do you think happens to people who are once in limelight, amazing limelight, current cricket players, hockey players? How do you think they should deal with it? I think they have to take a back seat. That's my personal perception is that once I stopped playing cricket, I said I will never like to go back to the dressing room. That's not my place. You have to detach yourself. You have to say, mera time tha, I had myself. But what you are trying to say, I understand. I've seen a lot of people don't want to let it go. Correct. They don't want to let it go, but honest, you have to be honest to yourself and say, man, thank you, I have to go. It's not like acting. Yeah, because It's at the not age like of 90, acting. 80, if your faculties are working, Yeah. you can keep on doing that. But this is not acting, it's a sports with your body, and sports like cricket, very athleticism required. And there is a certain age for everything. So I feel, no, it's not the same. When you start playing a 15 years younger player with you and you can see their energy and you remember your young days and you can see, oh man, this was what I used to be. A whole day playing, evening party, going out, no hassle. Your energy of your body is so much. But then a time comes where you say, look, can I have a cup of tea? You go, I don't want to go out for dinner. I just want to see television. You have to change yourself with the time. And I think I was preparing myself. This is a very good dream and you have to let it go. Wow, that to come to that understanding can be very motivational, but can be very sad also. Only 2 things. If you are not satisfied, then you always keep something in your mind. It is the satisfaction what you achieve on the ground. You have to be honest. You given best of your ability on the field. If you honest to yourself, then it's not very difficult to leave. Everybody love to play for the country, without any doubt. Even you can say Sachin Tendulkar, 24 years played, he still want to play for the country. But you have to say, look, I'm not the same. Let the younger a lot should come out. Let them play this game and we will be a spectator.
I always felt cricket was my school days, university days. Once you pass that, you don't go back into the school again. Yeah, that's... You don't go back to the university. So I felt, no, time has come. I have to move on, and I have to move on in other things. What level of golf have you reached? मतलब क्रिकेट में पता लगता है कि आपने वर्ल्ड कप जीत लिया या आपने इतना रिकॉर्ड मैक्सिमम विकेट्स ले ली टेस्ट क्रिकेट में फॉर अ लॉन्ग टाइम यू आर होल्डिंग दैट रिकॉर्ड मतलब यू नो दैट दिस इज द लेवल यू हैव टू रीच इन गोल्फ हाउ डू यू नो दैट यू हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल Golf, if I compare with cricket, on cricket I'm depending on somebody. Golf I'm not depending on anybody. And that's why this game was more challenging to me. कि मैं किसी पे depend नहीं हूँ. In cricket, I bowl, somebody have to take a catch. If I'm taking a run, somebody is running with me. So it's not very individual. But here is your own talent and ability. 100%. You hit a shot, the ball is there. You hit a bad shot, you have to criticize yourself. So one, start learning how to criticize yourself, and you take a challenge to yourself. This is the game. Can I do it? If you do it, you feel very proud. I have the talent. I can play this game. In cricket, again I will say, you're depending on somebody. You bowl brilliantly. You bowl such a great spell and 3 catches drop. End of the day, nobody will mention that. They will say, oh, in 10 overs, he given away 40 runs, no wicket. You're depending on somebody. That's very beautifully explained. चलो आप फ्लाइट लेकर आए हो अब तो उसके लिए थैंक यू आप स्पेशली इस शो के लिए आए हो मेरे Do you get I get very nervous in a flight. Do you get nervous in a flight? No, I think over the period of time. So get me out of this. Why I should not be a nervous flyer? I'm a nervous flyer. I personally feel you're just sitting in your drawing room. Your comfortable flight is very important. And from last 15 years, I start happening if I can reach there half an hour early. I don't like to board the last person. So I want to be there, whatever is newspaper or music, you sit down. And you have to be relax yourself. If it's going to happen, it's going to happen. But वो कैसे समझाएं अपने आप को? You have to believe. If you're going to slip in the bathroom, nothing you can do about that. It's going to happen. It's going to happen. So I personally feel, to me, traveling is no problem. I enjoy traveling. A comfortable traveling is very important. So when the flight is a little bumpy, what do you tell yourself? It's fine. It's a good ride. That's all. You have to be on the worst place to enjoy yourself. When you don't make 100, you make it 0. That's not your day. Just enjoy yourself. But don't enjoy yourself on the cricket field when you're on the field. That moment, you don't let it go. But when you're out, you're not taken wicket or not, come to the dressing room. You have to be honest. Have you done your best or not? So if you apply yourself 100%, then there is nothing to be worried about. Again, that is over the period of time you learn to be honest to yourself. आपको किस चीज़ से डर लगता है? मतलब what do you fear? लेकिन डर नहीं लगता. I think Kapil को किसी चीज़ से डर नहीं लगता. I think I am not a person who like to get worried about anything. If you give me, here is your wallet and it's the handbag, you have to travel around the world alone, I have no problem. So you condition yourself. And when you condition yourself, life is very easy. Some people say life is struggle. Life is the beautiful thing. How can life be a struggle? Whichever life you got it, there is nothing called struggle in my life. It is beautiful moments what I have to remember. And this was your attitude even when you were a teenager? I condition myself. How did you do that? I always says how I can enjoy myself in this surrounding.
I don't look for, I have to be in the best place. I always look, if I am on this place, like I'm doing interview, can I enjoy this moment and enjoy this life? And that's it. At the moment, I am in this zone where I want to enjoy this surrounding, interview, and that's it. So who gave you this attitude? Over the period of time, you learn while playing cricket how you can enjoy yourself. And I think we played sports. Sports is for fun. Every young kid, when he's very young, a mother or father or parents give them bat ball. By the time you become 5, 6, they take the bat ball away and give them pen and pencil. And I personally feel education should be fun. If education is fun, there is no problem. In our time, the education wasn't a fun. Yes, it was not. I mean, It's I'm not older fun. than you, but They were forcing us to study. They should say, like my daughter, I asked her one day, I said, let's bunk Amia, a school. Amia. 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 I said, let's bunk a school and we'll have fun. She said, what kind of father you are? I said, that's how it is, the life is. So, आपके फादर ऐसे थे? no, आपके फादर कैसे थे? I think we were growing up at that stage. Sorry, can I ask you to get your glasses off, because I think people like to see eyes. My. That's beautiful. Because what is going on in your mind? Because sometimes they read it. No. So how was your father? My father expired very young when I was 14, not even played 15 years. Partition के बाद they shifted After the from partition. Rawalpindi. Montgomery, Sahiwal, and that area, Rawalpindi, and they had a very hard time. Whatever I know, they struggle. And from there, they come to Fazilka for a while, and then the new city, Chandigarh's built up, and his friend was there. He said, I will supply you the timber and you go and settle in Chandigarh. That's how the things moves on. But he didn't see my success, Oh, that's, and Do you feel bad about it? I do. Look, I think the parents love to see. of course. And by 75, I played first class a match. By 75, he expired Oh. at the same time. My mom's seen that, and I think they have seen struggle. My brother seen quite a bit struggle, not what I didn't see much of his struggle. I seen the struggle in a sense I could see that they didn't have such a comfortable life. But I born in Chandigarh, the life was much more easy at that time. Perhaps it was a small town then, and when it's a small town, the life was much more easy. If you have little bit of money also, the life can be comfortable. We were 7 brother and sister, and I don't think so I seen such a struggle, but what I heard the story from family, they gone through. Once you come out from, leave your home and have to settle somewhere else, it's a tough, which we have seen in the movies. 100 of movies have been made on after partition, what happened, people gone through. So it was no different. My parents also. Did partition change your father as a person? Did he speak about it or something? Not much, but Was he a quiet man? he was an aggressive person, because when you've seen something, a very beautiful life, he traveled around the country when he used to live in village. And I think I didn't see much of him, but mom used to scare us. Dad is coming, pado. Like, I think it was mother's Perception. effect. Huh. Yeah, and I think if the mother have to look after 6, 7 kids, so what does she has? She has only the fear. Yeah. I think सारा दिन काम करने के बाद अब बैठ जाओ, डैड आ रहे हैं. So dad was a हवा.
created by mom. But I think he was a very kind-hearted but very strong-headed person, very And you aggressive are person. completely opposite of that too. I am absolutely. And Did no, you make I a conscious effort to do that? I think Amya is once you have one kid and when you have a joint family, it's hell of a lot different. You can't put it two things together. Like in a joint family, we used to say, "Mom, kya bana hai? Khane ko kya hai?" And here we say, "Tu Amya, beta kya khana hai?" So we realized that कि we didn't have that luxury कि मेरे को ये खाना है. It was very different. जो हाँ. Mom बना क्या है? Correct. So in a joint family, it was totally a different thing and a tough, hard. I could say why I say कि I haven't seen the struggle. In way back in '75, I often gone in a school on a motorbike also, on scooter also. And in '75, if you have a car, that means the struggle is over. Yes. Today, it's a very comfortable. People can have cars and scooter and bike. But during that period, if you have a car, your status is gone one ahead. This is what I can presume. And it was a beautiful life. Had I not born in Chandigarh, I don't think so I would have played cricket or not. Because Chandigarh was city to spend a lot of time to yourself. When I come to Mumbai, when I come to Delhi and see, it's so difficult for people to play the sports. Go to the school, come back. They can't reach to the playground. By the time they reach to the playground, it's evening. So when do they play? So I felt I was lucky to born in Chandigarh. Of course, Kiran and Babu were born in Chandigarh. They said to hire to you because that's how they also started playing badminton for the country. Yeah. And now I'm very happy that Kiran is the member parliament because she once told me कि तुम यहाँ shift कर जाओ. तो मैं तो डर गया because I feel how much role your wife has played in you being the kind of person that you have become, or me? I think it was very big effort in a sense कि your job is home, my job is playing cricket, and let's not both of us get into the public eye. If I am public eye, let me be there, and if you can be a support to me, it will be wonderful. I think she was a great support. Not now, though I can easily say, when you are young, you don't understand. We got married very young and had. Was it an arranged marriage? No, mixed. You courted for one year. No, I wasn't arranged, but I made a very big effort. I said, not without my parents' blessing, I will not get married. And where did you see her first time? in Mumbai, ऐसे किसी function in में? CCI में, common friend, I was young. Before I played test cricket, I met her. She had so much energy, and I used to say, when you play cricket and you are so much tense all the time, whole day, pressure, working, enjoying yourself on that, you want to relax. And she was the one who was talking all the time. And that's give me relaxation. Certain people can talk. I was a very quiet person in the beginning. I didn't have a guts to talk. I didn't know nothing apart from playing cricket. बिल्कुल ठीक है, लगा. हमारे लिए कहते हैं पहली बार जो प्लेयर आता है उसका बॉल ही लग जाए तो बहुत है. बहुत बड़ी बात है. मेरे तो पेड़ के बाद चला गया. हाँ, वो जहाँ मर्जी जाए. Thank you. So as a internally, how does golf help you? You challenge to yourself. अच्छा. To know your own ability. One, आपको कहते हैं कि आप अच्छे एक्टर हो. क्या आप अच्छे एक्टर हो? I would like to believe that. आप अपने आप से सच बोलो कि हाँ मैं यार ठीक हूँ. हाँ सर. ये मैंने रोल अच्छा किया, ये नहीं. आज मैं अच्छा खेला पर मैं कल अच्छा नहीं खेला था, स्कोर अच्छा था. Correct. हम 100 बनाते हैं, हम कहते हैं बहुत लोगों को बहुत मज़ा आया.
क्या तुम्हें मज़ा आया? नहीं, आज 100 बना पर वो मज़ा नहीं आया। So you were telling me in the break कि क्रिकेट और गोल्फ में there's a ने ज़्यादा दोस्त जो है गोल्फ में बनाए हैं। इसलिए कि क्रिकेट में जब आप खेलते हो आपकी सिक्योरिटी, आप किसी को मिल नहीं सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते, एंड खेलते हो आप अपने क्रिकेटर्स के साथ रहते हो, आपको बाहर के लोग नहीं मिलते भी हैं तो वो ओवरऑल होते हैं कि ये क्रिकेटर है, इससे ऑटोग्राफ लेना है, फोटोग्राफ लेना है। जब आप गोल्फ खेलेंगे, हम 4 घंटे घूमेंगे तो मुझे आपका कुछ पता चलेगा, आप क्या सोचते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, लाइफ क्या है, क्योंकि एक शॉट मार के अगली शॉट मारने के लिए 7 मिनट है। यस। तो हमें बात करने का मौका मिलता है। जब हमें बात करने का मौका मिलता है हम असेस करते हैं ये आदमी कैसा है कैसा नहीं। करेक्ट। तो दैट्स वाई गोल्फ में दोस्त बनते हैं, क्योंकि अगर आप स्पेंड करोगे 4 घंटे गोल्फ खेलोगे तो कुछ ना कुछ तो पसंद आएगा। और उसके बाद आप ख़त्म करते हो, आप चाय कॉफ़ी पीते हो या ड्रिंक करते हो तो और 1 घंटा, देन आपको उस आदमी की नेचर पता चलती है, यार ये अच्छा आदमी है, ये दोस्त बनाने के, क्योंकि उसकी जो लाइकिंग्स हैं आपकी लाइकिंग के साथ है कि नहीं। तो आपको लगता है कि हाँ यार ये अच्छा आदमी है, इसके बाद अगली बार भी मैं इसको मिलूँगा, इसके साथ गोल्फ खेलूँगा। बट इन क्रिकेट होता ही नहीं है। वो गया बोर्ड की तरफ। हाँ बिल्कुल गया था। ओह फैंटास्टिक। सो ये है आइडिया, और वहाँ पर होल बना होगा। हाँ, तो उसके और पास के कहीं चले गए। अगर चला गया, अगर मैंने 1 में डाल दिया तो मैं 1 बेटर हो गया। हाँ। अगर वहाँ मैं 3 शॉट और लिए तो 1 वर्स्ट हो गया। ओह मैं ट्राई करूँ सर? हाँ कीजिए। रखना भाई तनुज। तो पहले ज़रा पोजीशन देख लीजिए। हाँ आप ये पकड़ के कोशिश करो कि आपका हाथ ना हिले। हाँ एक ऐसे ग्रिप अच्छा बन जाए। अच्छा, इसके ऊपर से। हाँ कि आपका नहीं, आप नॉर्मल पकड़ो। अच्छा। नॉर्मल जैसे ये होता है ऐसे 4 उंगली। हाँ, हाँ। लेकिन ये उंगली इसके बीच में रखो कि आपका ग्रिप ना हिले। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखिए ये है, ये रखा ओके ओके। एक उंगली। हाँ, हाँ। और जब और ग्रिप अच्छा होना चाहिए, कंफर्टेबल एज यू लाइक। तो टांग का भी कुछ करते ना सर? नहीं, आप सिर्फ एट द मोमेंट आप टांग नहीं, मैं आपको कहता हूँ कि आप सिर्फ बॉल को मारना है। अच्छा। आप उधर नहीं देखिए। अच्छा। सिर्फ इसको मार के दिखाइए मेरे को। ये देखिए इतनी दूर है। एक बार फिर बॉल दो, फिर एक बार बॉल दो। मतलब तो वो भी, उसका भी जजमेंट। हाँ वो देखना नहीं है, देखने के लिए हम खड़े हैं। आप सिर्फ इधर देखो कि बॉल पे लगे, हिलना नहीं। अच्छा रख बेटा। हाँ आप इतना पास खड़े हो, इधर रखो और पास आओ। अच्छा। इधर रखो। अपना जजमेंट अपना बॉडी का बनाओ कि हाँ कि अब टच कर सकोगे आप। हाँ जोर से बस। 1 2 ये लगना शुरू हुआ, राइट। हाँ तो इसलिए आप जोर से नहीं, टाइमिंग होती है। एक बॉल दो और। अच्छा मैं आपको how does it, ये देखो, बस आपके लिए ये बहुत है। अच्छा। कि मैं हर बार इस टी पे मारूंगा, आप हर बार टी पे मारो, बॉल भी नहीं चाहिए, इतना है। आप सिर्फ टी पे मारिए, जैसे मर्जी खड़े हो जाइए, बस हर बार ये टी पे लगेगा तो आप बॉल को मार सकते हो। बिल्कुल ठीक है, लगा। हमारे लिए कहते हैं पहली बार जो प्लेयर आता है उसका बॉल ही लग जाए तो बहुत है। बहुत बड़ी बात है। मेरे तो पेड़ के बाद चला गया। हाँ वो जहाँ मर्जी जाए। So as a internally, how does golf help you? You challenge to yourself. अच्छा। To know your own ability. One, आपको कहते हैं कि आप अच्छे एक्टर हो। क्या आप अच्छे एक्टर हो? I would like to believe that. आप अपने आप से सच बोलो कि हाँ मैं यार ठीक हूँ। हाँ सर। ये मैंने रोल अच्छा किया, ये नहीं। आज मैं अच्छा खेला पर मैं कल अच्छा नहीं खेला था, स्कोर अच्छा था। करेक्ट। हम 100 बनाते हैं, हम कहते हैं बहुत लोगों को बहुत मज़ा आया,
क्या तुम्हें मज़ा आया? नहीं, आज 100 बना पर वो मज़ा नहीं आया। So you were telling me in the break कि क्रिकेट और गोल्फ में there's a you आप ने ज़्यादा दोस्त जो है गोल्फ में बनाए हैं। इसलिए कि क्रिकेट में जब आप खेलते हो आपकी सिक्योरिटी, आप किसी को मिल नहीं सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते, एंड खेलते हो आप अपने क्रिकेटर्स के साथ रहते हो, आपको बाहर के लोग नहीं मिलते भी हैं तो वो ओवरऑल होते हैं कि ये क्रिकेटर है, इससे ऑटोग्राफ लेना है, फोटोग्राफ लेना है। जब आप गोल्फ खेलेंगे, हम 4 घंटे घूमेंगे तो मुझे आपका कुछ पता चलेगा, आप क्या सोचते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, लाइफ क्या है, क्योंकि एक शॉट मार के अगली शॉट मारने के लिए 7 मिनट है। Yes. तो हमें बात करने का मौका मिलता है। जब हमें बात करने का मौका मिलता है हम असेस करते हैं ये आदमी कैसा है कैसा नहीं। Correct. तो दैट्स वाई गोल्फ में दोस्त बनते हैं, क्योंकि अगर आप स्पेंड करोगे 4 घंटे गोल्फ खेलोगे तो कुछ ना कुछ तो पसंद आएगा। और उसके बाद आप ख़त्म करते हो, आप चाय कॉफ़ी पीते हो या ड्रिंक करते हो तो और 1 घंटा, देन आपको उस आदमी की नेचर पता चलती है, यार ये अच्छा आदमी है, ये दोस्त बनाने के, क्योंकि उसकी जो लाइकिंग्स हैं आपकी लाइकिंग के साथ है कि नहीं। तो आपको लगता है कि हाँ यार ये अच्छा आदमी है, इसके बाद अगली बार भी मैं इसको मिलूँगा, इसके साथ गोल्फ खेलूँगा। बट इन क्रिकेट होता ही नहीं है। क्रिकेट में क्या होता है? क्रिकेट में खेले, वापस होटल गए, खाना खाया, बंद किया, नेक्स्ट डे ट्रैवल। Is it because of the discipline or is it because of the competition? No, golfer are 100 times more disciplined. Golf needs. They are 100 times more disciplined because their target is very small. In cricket, there is 360 degree. In golf, in that 4 inches hole is that target. Now, discipline. A shooter have more discipline than cricketer because उसका टारगेट ही इतना है, उस समय वो नहीं हो सकता। ये नहीं कि क्रिकेटर को जब वो बॉल आती है उस टाइम उसका कॉन्सेंट्रेशन शायद किसी और स्पोर्ट्स से भी ज़्यादा हो, बट आपको रिलैक्स है, आपका टारगेट बड़ा है। एक शॉट को आप इधर भी खेल सकते हो, इधर भी खेल सकते हो। इन क्रिकेट, इन गोल्फ आपको सिर्फ एक ही जगह खेलना है। आपको गुस्सा किस चीज़ से आता है? मेरे को गुस्सा नहीं आता, मेरे को क्रिकेट में आता था गुस्सा। किस बात पे आता था? कि अगर कोई प्लेयर एफर्ट ना लगाए, अवॉइड करे। आपने कैच का एफर्ट किया, छोड़ दिया तो कोई गुस्सा नहीं, पर कैच हो सकता था, आपने एफर्ट नहीं लगाया। आई यूज्ड टू गेट इरिटेटेड, आई यूज्ड टू never lose my mind, but I used to say no, that's not the cricketer I like to know. आपके बारे में मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी पढ़ी कि आप खेल रहे थे और आपने 4 छक्के एक साथ मारे थे, या आई थिंक सो आपने पूछा होगा। तो एक लेडी थी जिसने एक प्लेकार्ड रखा हुआ था 1-6 दिस साइड ऑल्सो, ऐसा था कुछ, और आपने एक्चुअली वहाँ मार दिया था। आई थिंक ये कहानी है, जो स्टोरी टेलर्स होते हैं ना वो बड़े मज़ेदार लोग होते हैं। अच्छा, ये फैक्ट है होगा, मेरे को नहीं पता। मैं कह रहा हूँ जो स्टोरी बनाने वाले होते हैं ना वो बताते हैं कि बादल थे, पंछी घूम रहे थे, एक साइड पे लोग बैठे थे। हमें तो उस समय नज़र ही नहीं आता, क्योंकि हम तो इतना इन्वॉल्व हो जाते थे कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आप सोचो कि आपका ध्यान क्राउड में चला गया तो आप खेलोगे क्या? So what is one story that you have loved about yourself and one story you have not loved about yourself? If I look back, rewind my life, I should have practiced more. Practice more. On batting, I could have done much better in the batting. And I love about myself, I was a passionate person. That's the bottom line. Whatever things I do with the passion. Got 400 wicket, first thing I pick up the phone and called him. I said, hello, Raja, kar diya. But we didn't talk for 3 years about that. But I kept it in my mind कि मेरे को अपने आप को प्रूव करना और उसको भी प्रूव करना है कि you thought about me wrong. You put a good target for you. एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, एज ए स्पेक्टेटर, एज ए पर्सन हु वाचिंग, ये जो आप क्रिकेटर्स जो हैं ये पिच के दौरान जो बीच में जाते हैं और कुछ बातचीत करते हैं, वो यूजुअली क्या बातचीत होती है? आई थिंक बेसिकली यू वांट टू रिलैक्स योरसेल्फ। आप पहले समझिए कि आप 11 फील्डर्स के पास में खड़े हुए हैं, दे आर ऑल एनिमी ऑफ योर्स, एंड व्हाट हैपन इज आपको अपना दोस्त मिलता है तो कंफर्ट होता है। कभी कहते भी नहीं, कई बार आके टैप करते रहते हैं, ठीक है
लड़ेंगे, करेंगे। What is the difference between the cricket team that used to represent India and the present day cricket team? मैं presume करता हूँ जो स्टोरीज आती हैं उसके ऊपर कि ये आजकल के क्रिकेटर हैं, मुझे नहीं पता, and it will be unfair. I can only talk about our cricketer because मैं उनके साथ रहा हूँ. So, do you think that this is just my perception, it's not necessarily your observation. Do you think there's too much of cricket being played? No, it is. But हमारे टाइम हम प्रोफेशनल नहीं थे, हम एमेचर थे. आज के क्रिकेटर प्रोफेशनल हैं, जब हैं तो उनके लिए और कोई काम ही नहीं है. So when you say professional है मतलब आप They play for money only. हाँ. Because that's there. जब IPL खेलते हैं तो उनका एक होता है, खेलते हैं, अपना पैशन है उनका, बट उनकी बोलियां लगी जाती हैं, उनको पैसे होते हैं. हमारे टाइम में आधे लड़के स्टेट बैंक को काम करते थे, रेलवेज में होते थे, निर्लॉन के लिए सुनील गावस्कर खेलते हुए करते होते थे. तो आपका प्रोफेशन क्या है जहां आप 12 महीने आपको तनख्वाह आती है. और एमेचर वो होते हैं कि हाँ इनको कभी कभी और भी कहीं से पैसे आ जाते हैं, क्रिकेट खेल के आ जाते हैं. तो आज के क्रिकेटर सिर्फ उनका प्रोफेशन है टू प्ले क्रिकेट. ज़्यादा है मैं मानता हूँ, बट उनको और कुछ करना भी नहीं है. So if given a choice, you would have played cricket at that time or this time? I don't know. The time I played, It's a hypothetical question. No, the time I played, that was the best time. I can't be in anybody's shoes. मैं नहीं assess कर सकता. अगर करूँगा भी तो वो गलत thought होगा, क्योंकि हर एक को अपना टाइम बड़ा अच्छा लगता है और मैं कहूँगा मेरा टाइम बहुत अच्छा था. जब आपकी कैप्टनसी के अंडर क्रिकेट में हमने वर्ल्ड कप जीता था, who was the first person you wanted to inform? बिकॉज उन दिनों मोबाइल होते नहीं थे, मैसेजेस जाते नहीं थे, आपका दिल से किसको इन्फॉर्म करना चाहते थे? आई थिंक कोई ऐसा नहीं था. लाइक यू वांट टू बी क्लोज टू योर पेरेंट्स फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड द पीपल हु चैलेंज यू योर एबिलिटी. करेक्ट. You know, you want to say, I done it. And I would say my best friend, Bharat Reddy, he said to me when I was almost taken 300 wickets, he said, you can't take 400 wickets. I said, challenge. So when I got 400 wickets, first thing I pick up the phone and called him. I said, hello, Raja, kar diya. But we didn't talk for 3 years about that. But I kept it in my mind कि मेरे को अपने आप को प्रूव करना और उसको भी प्रूव करना है कि you thought about me wrong. You put a good target for you. एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, एज ए स्पेक्टेटर, एज ए पर्सन हु वॉचिंग, ये जो आप क्रिकेटर्स जो हैं, ये पिच के दौरान जो बीच में जाते हैं और कुछ बातचीत करते हैं, वो यूजुअली क्या बातचीत होती है? आई थिंक बेसिकली यू वांट टू रिलैक्स योरसेल्फ. आप पहले समझिए कि आप 11 फील्डर्स के पास में खड़े हुए हैं. दे आर ऑल एनिमी ऑफ योर्स, एंड व्हाट हैपन इज आपको अपना दोस्त मिलता है तो कंफर्ट होता है. कभी कहते भी नहीं, कई बार आके टैप करते रहते हैं, ठीक है लड़ेंगे, करेंगे, एंड ज़्यादा से ज़्यादा हाई लेवल पे जाता है कि यार मैं उसको कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा थोड़ी देर. आई डोंट नो, कैन यू हैंडल दैट बॉलर फॉर ए व्हाइल. अच्छा. सो उस समय आपका थॉट प्रोसेस उस समय क्या है, या फिर आज तो मेरे को ऐसा लगता है, प्रेज्यूम करता हूँ कि हम अभी ये इजी करो, वो गेंदबाज आएगा उसको हम थोड़ा तेज़ खेल सकते हैं, लेट्स नॉट लूज़ विकेट. अगर इस समय विकेट लूज़ किया तो देन इट विल बी वेरी हार्ड टू कम बैक. सो इस तरह की, क्योंकि आप ही दोनों कैप्टन हो ऑन फील्ड प्लेयर, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब आपके दुश्मन इतने होते हैं तो अगर आप दो हो तो थोड़ा बहुत आपको कंफर्ट मिल जाता है. एंड game of cricket is the confidence, and your friend or your colleague can say you can do much better, but don't lose your patience. एक कई बार कोई thought process आ जाता है. आप कई बार देखते होंगे कि ग्राउंड में कोई ग्लव्स लेके आया है, पानी की बोतल लेके आया है, वो बाहर की टीम वाले असेस कर लेते हैं
कि अंदर का मौसम कैसा है, तो वो उनको शांत कर देते हैं कि थोड़ा सा ध्यान से, बिकॉज नाउ द स्टाफ इज सो मच दे कैन गाइड यू ऑल्सो. दे डोंट से कि अगर एक प्लेयर कोई हुक शॉट खेलता है, नहीं ठीक खेल रहा, तो उसको बोलते हैं ट्राई नॉट टू प्ले, अवॉइड दैट. लाइक मैसेज आज आते हुए समय नहीं लगता, बट द बेस्ट थिंग इज वो 2 players on the field are the best friend at that moment. Who was the most inspirational player of your time who inspired you while playing? Somebody from your team? Somebody? I think I come from a very small town. You don't know. I never seen Test cricket before. I played my first Test. That was the Test I seen. But I think your colleague, your senior player, become inspired. You get inspired by them. If you are young, your brother inspired you. Then your state guy, your captain inspire you. But when you see around the world you travel, then you come to know the ability of other people. Then if you are ready to get inspired by other people and inspired by those people who perform so well, you should keep your mind and ears open all the time. Any name comes in your mind? I got inspired by Richard Hadley because I used to say, how come he's so good and I can't do it again and again the same thing. Somebody who discouraged you? I think I'm not a negative person. I always say, a man like this I don't want to be. Man like this I don't want to be. Oh, so that's not discourage. I used to take the worst person. I used to take, let's not. If I don't like somebody, I will avoid, but don't say anything. I'll say, let me not say. So if you were to tell today's cricketers, you are a legend. I personally don't like to be called legend. This thing उनका तरीका होता है फिर एक्टिंग में जैसे वो थेस्पियन बुलाने लगते हैं, लेजेंड बुलाने, मतलब वो आप रिटायर हो जाओ. तो but you proved it for the country. What is it that one point that you will give the present cricketers, not necessarily who are in the team, but younger generation who are great dreams? I think one word you use, dream. आपके ख्वाब होने चाहिए और अगर आपको वो अचीव करना है. And again I'll come back to the very simple basic. Don't lie to yourself. Don't go and say home, I have more ability than this. Every human being knows कि उसकी कितनी ability है. Some people very good in writing, they can't express themselves. Some people are very good in expressing, can't say a word. But the time you are honest to yourself, half of the problem in life is over. To all the young boys and the young girls who want to achieve in sports, or want to achieve in life, try to be honest and passionate about things what you do. Like Sachin इतना नीचे से बल्ला पकड़ के सीधा शॉट is a genius. हम always कहते हैं क्रिकेट में या किसी जीनियस को कॉपी ना करो. Correct. Who are the other geniuses according to you? Oh, Vivian Richard, I mean Sunil Gavaskar, they are genius. जो जीनियस होता है उसको कॉपी नहीं, उससे सीख सकते हो, उसका माइंड, उसका थिंग. आपको बेसिक ठीक होना चाहिए. जैसे हम वी ऑलवेज सेज यू राइट लाइक दिस सिंपल, बट यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. बट जीनियस कैन डू डिफरेंट थिंग. दे कैन दोनों हाथ से भी लिखें तो वैसी हैंड राइटिंग हो सकती है. पर हम कॉमन प्लेयर को ये कहते हैं कि आप नॉर्मल क्रिकेट में क्या कहते हैं कि इसका सीम सीधा होना चाहिए व्हेन यू आर बॉलिंग, होल्डिंग विच यू फील कंफर्टेबल. ये ऐसे पकड़ा जैसे मैंने थ्रो फेंकनी है. अच्छा. और उसके ऊपर मैं आउट स्विंगर हूँ या इन स्विंगर हूँ. अगर मैं आउट स्विंगर हूँ, मेरा थंब थोड़ा सा इधर बाहर होता है कि बॉल ऐसे जाके सीधा जाके जाए. सीम ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पकड़ोगे और हाथ सीधा रहेगा, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. होल्ड द सीम and this thumb. Some of the player does this also. Cross करते हैं. हाँ नहीं, उनका तो मेरे से किया भी नहीं जाता. इतना है, वो thumb को ऐसे बना देते हैं. तो हम कहते हैं कि thumb and this wrist should be straight. Okay. Wasim Akram, one of the finest swing bowler, his thumb was like this
एंड आई यूज्ड टू से ऐसे कैसे फेंक सकते हो, बट जीनियस कैन डू डिफरेंट थिंग। जैसे सचिन इतना नीचे से बल्ला पकड़ के सीधा शॉट, इज अ जीनियस। हम ऑलवेज कहते हैं क्रिकेट में या किसी जीनियस को कॉपी ना करो। Correct. Who are the other geniuses according to you? Oh, Vivian Richard, I mean Sunil Gavaskar, they are genius. जो जीनियस होता है उसको कॉपी नहीं, उससे सीख सकते हो, उसका माइंड, उसका थिंग। आपको बेसिक ठीक होना चाहिए। जैसे हम वी ऑलवेज सेज यू राइट लाइक दिस सिंपल, बट यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। बट जीनियस कैन डू डिफरेंट थिंग। दे कैन दोनों हाथ से भी लिखें तो वैसी हैंड राइटिंग हो सकती है। पर हम कॉमन प्लेयर को ये कहते हैं कि आप नॉर्मल क्रिकेट में क्या कहते हैं कि इसका सीम सीधा होना चाहिए व्हेन यू बॉलिंग होल्डिंग विच यू फील कंफर्टेबल। द पर्सन हैव टू फील कंफर्टेबल। अगर मैं कंफर्टेबल ऐसे हूँ तो ये मेरा होता था ग्रिप, जिससे मैं थ्रो भी वैसे फेंक सकता था और बॉलिंग भी कर सकता था। बट सम पीपल कैन होल्ड लाइक दिस। And how much start you used to take? 19 yards. 19 yards, which is huge, no? आई थिंक कभी कोई 25 लेता है, कोई 22 लेता है। एवरीबडी इज़ डिफरेंट। आई यूज़ टू फाइंड, पहले मैं ज़्यादा लेता था, फिर एनर्जी बचाने के लिए यू स्टार्ट आफ्टर सम टाइम कि दिस इज़ द रियल, माई बॉडी गेट टोन एंड गेट बेटर रिस्पॉन्ड विद दिस रन अप। आई थिंक क्रिकेट में सबसे जल्दी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फास्ट बॉलर के हाउ फास्ट यू कैन रिकवर। Okay. 6 बॉलों के अंदर जो वो 2 मिनट होते हैं या 3 मिनट, रविंद्र जडेजा के साथ गेंदबाज बॉलिंगबाजी करोगे तो 1 मिनट भी नहीं वो देता। योर रिकवरी बिकॉज यू आर बॉलिंग यू नो 130, 140, your energy level goes so much. Your heart need to rest and recover. Everybody's. So वो आप कितनी जल्दी रिकवर करते हो is the most important thing for a sportsman. एक थोड़ा सा, can you just take a little from here to there, just and a bowling action? मेरी अब उम्र थोड़ा रही है बॉल आप करने की। मतलब जीनियस हो, आपने अपने आप को नहीं बोला। I used to sit there as a teenager, smoke. It used to be longer. It was slightly longer. Funnily longer. And my mother used to stay here, so I used to smoke without knowing and throw it into this house. so that gentleman who lived there is now a very important Tamil writer. Really?